सॉरी। इससे पहले आके तुमको माता जी के पीछे गाने के लिए तुमको मौका शायद नहीं मिल सकता है आप गाने के। तो मैं इसको बोल रही हूँ आखिरी शुरू करो शुरू करो शुरू। हाँ तो मेरा फ़ोन कहाँ गया? Where is my phone? अबे मेरा फ़ोन सॉरी। I am. Wait. बार कोरुणा करो वैष्णव गोसाई। बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावना जहार निकट गेले पाप दूरे जाय। जहार निकट गेले पाप दूरे जाय। जहार निकट गेले पाप दूर जाए। पाप दूर जाए। ए मन दयाला प्रभु के बा कोथा गंगार परश होइले पश्चाते पावन। गंगार परश होइले पश्चाते पावन। गंगार परश होइले पश्चाते पावन। परश होइले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारा गुण। दर्शने
दर्शने पवित्र करो এই তোমারা গুণ दर्शने पवित्र करो हे तुम्हारा गुण हरि स्थाने अपराधे तारे हरि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम हरि स्थाने अपराधे तारे हरि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण स्थाने अपराधे नाही परित्राण तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण स्थाने अपराधे नाही परित्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद को हे न मोरा वैष्णव परा गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण गोविंद को हे न मोरा वैष्णव परा गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली जन्म करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली जन्म करी आशा चरणेर धूली नरोत्तमे कोरो दया आपनार बोली नरोत्तम करो दया अपनार बोली नरोत्तमे कोरो दया आपनार बोली नरोत्तम करो दया अपनार जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा 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 शिल जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय हरे कृष्ण मामी का गाना छोटा सा वही गाना टाइम कुछ नहीं है गाँव में अरे ये माँ भी आ जाऊँगी
lyrics. Shuddha Bhakta? शुद्धा भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला रेणु भजन अनुकूला शुद्धा भक्ता चरण रेणु भजनयानो कूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति परमूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल माधवती भक्ति जननी चेतन पालन करी माधवती भक्ति जननी যতন পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরমে আদরি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে গরি सब स्थाने करल ब्राह्मणरांगे गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रांगे जे सब स्थान हेरिब प्रणय সঙ্গে মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে গৌরবিহিতা কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দের হৃদয় নাচে যুগল মূর্তি দেখিয়া মোরা পরমানন্দ যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় প্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ যায় যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলকা বায়া যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখান সীমা আয়া চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখন সীমা তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণা মাধব তোষণ জানি তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তোষণ জানি सेवन जीवन सार्थक मानी गौर विहित शाक सेवन जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাহা রাতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার কর তাহা প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার কর তাহা জয় প্রভুপদ 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 শ্রীল প্রভুপদ জয় গুরুদেবা 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 জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা शीला गुरुदेव की जय
प्रभुपादरिदं त्वरितं विजितं बहुशास्त्रगणान् अनुवादकृतं गुरुवाणी धृतं निजदास्यकृतं प्रभुगौरभृतं शुभाङ्गसुतं चरमे पठितं शरणं मृगितम् अमृतं रसितं प्रभुपादवृतं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रभुपादरिदं त्वरितं विजितं बहुशास्त्रगणान् अनुवादकृतं गुरुवाणी धृतं निजदास्यकृतं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं रसराज परायण मार्गोचरं शुभगोरतीर्थ हरिनामधृतं गुरुदक्षिणया बलिवच्चरितं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं त्रयमाभरणं हृदये निहितं सचनेन रतिः तव दर्शय माम् अधिपं श्रयमा त्यज मे च वपुं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं जन्मदिने चलचित्रकृतं सगुरो महिमा जगते विवृतं शुकशास्त्रफला स्वनुवादकृतं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं नृपभर्तृहरे नगरे वसितं जयमादनमोहनवासकृतं सततं नितरां हरिकार्यरतं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं
सुतं मधुभावयुतं मधुरप्रियया मधुमादवदं तव चारुचरं हृदशीतकरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं जननं चलनं गुरुदास्यकरं शरणं चरणं बोलिकर्मपरं गोतिकृष्णमयं शकलं मधुरं प्रणमामि भक्ति चारु स्वामी वरं 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 कृपानस्मि तथाप्यकुरा सदायां कृपाया प्रभु देहि तुदास्य वरं तव दास्य वर भवरोगहरं प्रणमामि मुहुर् तव पादराजम् For 100 years, Krishna was away from Vrindavan. Krishna gave the assurance, I will come back quickly. Don't worry. The gopis were trying to stop him from leaving Vrindavan. They were just desperate to stop. Some gopis were holding the rein of the chariot, horses. Some gopis were pulling the chariot. We won't let you go. Some gopis laid down in front of the wheels of the chariot. And some gopis were beating up Akrura. You want to take Krishna and will never let you do that. So the gopis were in such a desperate situation. So Krishna assured them, don't worry, I'm just going there with a mission. The king has invited me, so I have to go. So don't worry, I'll come back. So Krishna, that way, has many wonderful qualities. One of these qualities is he breaks his vows. His words sometimes don't have any value. That's why when Krishna wants to make some promise and reassure fully, he makes the commitment through his devotee. Because his words may fail, but his devotee's words will never fail. Therefore he says, Konteya pratijanihi name bhakta pradashyati. Arjun, you declare. I won't say it. If I say it, people may think that I'm just another bluff. So you say it, that my devotees will never vanquish. So for 100 years, Krishna didn't go back. And on the occasion of solar eclipse, Surya Grahan, it's a custom that seekers of piety people go to Samanta Pancha, Kurukshetra, to take bath.
So many people went to Kurukshetra on the occasion of solar eclipse to take bath. And the gopis also went, the residents of Vrindavan also went to take bath. And Krishna also went. So they took bath, and the next day they were about to leave. And then the residents of Vrindavan got the news that Krishna and Balaram were there. So they immediately ran to meet Krishna and Balaram. By the time Krishna was already on his chariot, he was also about to leave. So they arrived there. And everyone was naturally very excited, very happy. But Radharani was not. Radharani's mood was, this is not Nandalala. Nandalala, my Krishna, he wears a peacock feather on his head. But this person is wearing a crown. My Krishna wears a yellow garment. And this person is wearing royal robes, a royal dress. My Krishna wears flower garland made of forest flowers. And this personality is wearing necklaces made of most precious gems and jewels. My Krishna carries a flute, and this one is carrying a bow and arrow and sword. And where I meet him, this is a solitary place on the bank of Jamuna. But this place is full of so many people, so much noise, so many horses, so many elephants. The elephants are trumpeting, so much noise. Horses are whining, and people are clamoring, so much noise. This is not where I wanted to see him, and not this is the way I wanted to see my Krishna. So the residents of Vrindavan, Radharani's devotees, could understand Radharani's mood. So what did they do? They got hold of Krishna's chariot. The horses were already harnessed. Along with the horses, they started to pull Krishna's chariot. Balaram was there, he's also their friend. Balaram's chariot also was being dragged. And the sister cannot be left alone, so take her also. To where? To. So that is Rath Yatra festival. From Kurukshetra, Krishna, Balaram and Subhadra are being dragged, drawn towards Vrindavan, where he will meet with Srimati Radharani. So Gundicha temple is actually Vrindavan. So that is the Rath Yatra festival. Incidentally, we also have to remember that our line is actually Shiksha Parampara. The line, the Guru Parampara that we draw is not based on Diksha. It's rather based on Shiksha. For example, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was not Diksha disciple of Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur was not the Diksha disciple of Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji Maharaj was not the Diksha disciple of Baladev Vidyabhushan. But that is how our line is. So what does it indicate? It indicates that it is a Shiksha Parampara, which is also known as Bhagavat Parampara. As we read Prabhupada books, he is our Shiksha Guru also. Yes, Prabhupada is the Guru as a Shiksha Guru. There are two types of Gurus. Shiksha Guru and Diksha Guru. Diksha Guru is the one who gives Diksha. Diksha Guru is the Guru who gives the mantra. And to the Diksha Guru one surrenders. He is the surrendering point. But Shiksha Guru
is the person who is training us in spiritual life. Now in ISKCON, whose Shiksha is prevalent? Whose Shiksha is most prominent? Not only most prominent, whose Shiksha is the Shiksha in ISKCON? Srila Prabhupada. Therefore, Srila Prabhupada is undoubtedly the Shiksha Guru of all the devotees of ISKCON for all time. And this is the point. Like Prabhupada is Acharya. Acharya means Guru. Srila Prabhupada is the Shiksha Guru. And that is the difference we are having with some other group in ISKCON. I mean, who, kind of splintered away from ISKCON. They are saying, no, Prabhupada will be the Diksha Guru. No one is qualified to give Diksha. I mean, we have problem with that concept because there is no such precedence, there is no such scriptural evidence. It never happened in the past. It's not mentioned in the scriptures that after one's disappearance, one will continue to give Diksha. It doesn't happen. And Srila Prabhupada himself didn't say anything about that. So, Prabhupada is not going to function as a Diksha Guru, but Prabhupada is functioning as Shiksha Guru. And Prabhupada will continue to function as Shiksha Guru, because Prabhupada's Shiksha is the foundation of ISKCON. So Maharaj, the other day I saw this YouTube video with this very famous guru. I mean, he's famous all over the world. And he boldly proclaimed, there is no God. Like, what's your take on this? Well, when one claims to be a guru, he must give proper knowledge. The knowledge about the spiritual reality. The spiritual world, spiritual reality is beyond our sense perception. Therefore, with our mind, with our intelligence, and with our other sense perception, we cannot actually perceive the spiritual reality. Therefore, the knowledge about the spiritual reality must be imparted by one who has seen that world, who has proper understanding of that world. Without having proper knowledge about that world, if somebody says God is not there or things like that, when one says there is no God, then the question arises, what is the basis on which he is saying there is no God? Like, did he study the scriptures properly under the guidance of a qualified teacher? If he did not, then he should just keep his mouth shut. He shouldn't speak. Like, these people are not guru. Guru means a teacher, but these people actually are cheaters. So they should be avoided. Especially intelligent class of people should consider what they are saying, whether there is foundation on those statements, whether there is any basis on those statements. Back one consideration, one thought in my mind. Like, I don't know whether you all are aware of it, but a few years back, some devotees from some other mutt, they were saying Prabhupada did not give everything.
So we have to go to them to get the higher stuff. Now, when we understand this, can we conclude that Prabhupada gave us everything? Isn't it? Rather, those who are saying that Prabhupada didn't give everything, they didn't understand what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give. That actually shows that they do not know. That's why they spoke like that. Prabhupada gave us everything. Actually, 2 years back, when we had the ILS, ISKCON Leadership Sangha, I actually gave a seminar on that. Srila Prabhupada gave us everything, including Raganuga Bhakti. And the point was this is what I actually presented. More elaborately with more scriptural evidence and all. Just in short, I just mentioned it now. Therefore, never ever think that Prabhupada didn't give everything. What Chaitanya Mahaprabhu came to give, Srila Prabhupada gave it in a perfect way. Those who think that Prabhupada didn't give everything and they have to go somewhere else, they are very, very unfortunate. They are making a very serious mistake. So I will request you all not to ever make that mistake. That's why I tell everybody, never leave ISKCON. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, we should accept everything in the favorable light of Krishna consciousness, right? Now, what is the favorable light? The favorable light is that when there is suffering, we consider that it is our karma. When there is enjoyment, we say it's Krishna's mercy. That is the attitude of a devotee. That is the way a devotee sees. On the other hand, a materialistic person, how does he see? When it is enjoyment, he says, well, I earned it, right? And when there is suffering, it's all Krishna's fault. Right? So this is how the attitude actually reverses in Krishna consciousness. What kind of personalities are priceless due to their nature? The one who accepts the instructions in the heart. Why Srila Prabhupada is so special among all his god brothers? Did it ever occur to you? Many of them are very scholarly. I had the good fortune of meeting some of Prabhupada's very, very advanced god brothers. And they're brilliant personalities. I was very fortunate to have a lot of mercy from them also. Brilliant personalities. But what made Srila Prabhupada stand out among all of them? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was surrounded by sannyasis. He gave sannyas to 27 disciples. He was surrounded by all these advanced devotees. Some of them were not even sannyasi, but extremely brilliant. So brilliant that when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was known for his scholarship, and if he got stuck with some shloka, he couldn't actually remember it. This devotee, this disciple, recited that word, shloka. So brilliant.
Swami Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had literally many luminaries among his disciples. But what was so special about Srila Prabhupada? Remember, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told about Srila Prabhupada? He is very keen to hear. He is very keen to hear. That means whatever Srila Prabhupada heard from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he just accepted it wholeheartedly within his heart. And that's why we can see that Prabhupada understood Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's teachings in a perfect way. All the scholarly disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur couldn't understand his actual mission, his actual idea, his actual objective. But Srila Prabhupada did. And that's why when Gaudiya Math practically fell apart, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's spirit was revived through ISKCON. ISKCON is actually the continuity of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's mission. He started Gaudiya Math, unfortunately Gaudiya Math fell apart. And Srila Prabhupada actually is continuing the mission. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to fulfill Mahaprabhu's prediction. And what is the prediction? Every town and village all over the world. So there was a need to take the mission outside. What he could not accomplish during his time, although he sent some of his disciples out of India to England and Europe. But Srila Prabhupada actually took the mission out of India to America. And then it spread all over the world. Now, if ISKCON is not the continuity of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's mission, then what is? If ISKCON is not the continuity of fulfillment of Chaitanya Mahaprabhu's prediction, then what is? So we can see a real disciple accepts the instructions of the spiritual master in his heart, makes it his whole life's mission. And that is why Prabhupada was so outstanding. बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मिदृशम् इहा जनिनानुरागः. O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings, and thus you have hundreds and millions of transcendental names such as Krishna and Govinda, in which you have invested all your transcendental energies. There are no hard and fast rules for chanting these names. O my Lord, out of kindness, you have enabled us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. So in this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu is making it clear that the holy name is non-different from Krishna. Although Krishna has so many names, Bahudha, many. Prabhupada translated it as hundreds of millions of names, transcendental names. But in each name you have invested your entire potency. So if Krishna's potency is there, Krishna's energies are there, then is there any difference between the name and Krishna himself? Krishna's energy
is just one-fold, or Krishna's energy is multifarious? Krishna's energy actually is absolute. Parasya Shaktir Bibidhaiva Shruyate. Krishna's energy, Krishna's Shakti, although they are manifold, but they are generally categorized in three categories. They are Sandhini, Sambit, and Ladini. The Sandhini aspect is the existence aspect. His form, etc. are Sandhini. Consciousness aspect is Chit, and Ananda aspect is Ladini. So if all of Krishna's energy is invested there in the holy name, then can this holy name be anything different from Krishna himself? It's a common sense consideration. Krishna's energy is not like ours, divided. And this energy, the energy in this form, energy in that form. No, Krishna's energy is all transcendental. And in this energy, the four aspect is Nam, Roop, Gun, and Leela. Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, and Krishna's pastimes, Krishna's activities. So all are there in the holy name. Krishna himself is there in the holy name. But it is in the form of Nam, sound vibration. And from the name, Krishna's form will become manifest. It's there. To us, the name will reveal Krishna's form. Krishna himself will appear through his name. Along with Krishna, naturally Krishna's qualities will appear. When Krishna appears, then will Krishna's qualities be separate from him? No, Krishna's qualities are there with him. And naturally Krishna's pastimes also will become manifest with him. So this is the identity of the holy name that has been revealed here. But Durdaivam Idrisham, but my misfortune, Durdaivam, my misfortune is Nanuraga. I do not have any anurag. I do not have any taste. I do not have any attachment. I do not have any love for this holy name. So Mahaprabhu is taking our position and making this point. Durdaivam, it's a misfortune. Why this misfortune? Because we are so entangled in the material nature. What is real love? Very good question. That means there is some unreal love. Therefore, there is a consideration of what is real love. Yes, let's consider what is real love. Love is actually an energy that is there in everyone's heart. This energy actually brings each other together. For example, when we are in love, we become together. Love brings us together. Hatred separates us. So this love is actually an energy that is there with the soul. And the soul has this inherent desire, inherent tendency to become connected to others. And actually this energy in the soul is meant to connect us
to the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead. That is the purpose of this love. But when we are oblivious of Him, when we are forgetful of Him, then we try to offer this love to others, of trying to exploit others, use them for our enjoyment. And in the name of love, that is what is going on in this world today. That's why I made that point. Unreal love. These are not real love, although people think that this is love. But you know actually what it is? It is lust. Lust is the tendency to utilize others for our own sense enjoyment. Like for example, you can say, well, the mother loves her child. But the thing is, the mother loves her child because the child came from her, therefore she has her connection, therefore she thinks that she has a connection with him. The mother loves her own child, but she doesn't love other people's child. She doesn't feel the same way about others. And what to speak of a young boy and a young girl falling in love? And actually, what is the ultimate consideration? The ultimate consideration is actually how we are going to enjoy each other, how we are going to exploit each other. Frankly speaking, in this world, what is going on in the name of love is actually lust. But real love is when it is offered to the Lord. When we offer to the Lord, then what happens? We become completely content. The heart becomes completely satisfied because now the love has been offered, now the love has been reposed onto the real recipient of love. So in simple words, I will say that real love is love for the Supreme Lord, love for the Supreme Personality of Godhead. हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का जन्म 1945 में बंगाल में एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ। 1970 में महाराज जर्मनी चले गए हायर स्टडीज के लिए और वहां पर उनको वैदिक ग्रंथ मिले और उनकी इच्छा जागृत हुई, उनका रुझान हुआ अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने का। भारत की जो धरोहर है, भारतीय संस्कृति, उसको जानने की और इच्छा हुई। अपनी स्टडीज खत्म करके महाराज वापस आए और अब एक गुरु की खोज में है और उनको पता लगा कि गुरु तो मिलते हैं हिमालय में। तो उस तरफ आगे बढ़े, ऋषिकेश पहुंचे, वहां देखा कि ये सब लोग, बाबा लोग, संत लोग सब चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं। तो उनको पता लग गया यहाँ पर मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलने वाले। वापस लौट आते हैं कलकत्ता में अपने घर और वहां पर उनको एक बहुत ही सुंदर पुस्तक मिलती है, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है और श्रील प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है। और महाराज बताते हैं, मुझे ये भी पता लग गया कि अगर कोई मेरे गुरु हो सकते हैं तो वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद। तो सच्चे गुरु की खोज में फिर निकल जाते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। वहां पहली बार श्रील प्रभुपाद से उनका मीटिंग होता है जनवरी 1977 माघ के महीने में। और ये वही स्थान है प्रयाग का और वही महीना है माघ का जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था, जिन्होंने उसको भक्ति रसामृत सिंधु में रचित किया। और फिर मार्च 1977 में महाराज का इनिशिएशन हुआ, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, और विद इन 2-3 मंथ्स स्नान पूर्णिमा के दिन श्रील प्रभुपाद जी से उनका संन्यास दीक्षा भी हो गया। महाराज बताते हैं, मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 2 महीने के ट्रायल पे, देखता हूँ कि मैं यहाँ रह पाऊंगा कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। और फिर महाराज बताते हैं ये 2 महीना कब 40 साल में बीत गए मुझे पता नहीं लगा। और महाराज जी के अद्भुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहली मीटिंग में श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, प्लीज ट्रांसलेट बाय बुक्स इन बंगाली लैंग्वेज, और उस इंस्ट्रक्शन को हृदय सार किया महाराज ने और लगभग 50 बुक्स का ट्रांसलेशन किया है बंगाली भाषा में। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज इज, उन्होंने हमें प्रभुपाद दिए, उन्होंने प्रभुपाद दिखाए
अपने सीरियल्स के माध्यम से, अपने एपिसोड के माध्यम से, अभय चरण सीरियल के माध्यम से। इतना विविड डिस्क्रिप्शन शिला प्रभुपाद का हम कभी नहीं जान पाते, कभी भी क्लोज नहीं हो पाते अगर भक्ति चारू स्वामी महाराज हमें वो वीडियोस नहीं देते। महाराज जी शिला प्रभुपाद के निजी सेक्रेटरी भी रहे हैं और महाराज का बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा है शिला प्रभुपाद से। और वो सारे मेमोर्स महाराज जी ने एक बुक में रखे हैं जो 2016 में पब्लिश हुई थी, ओशियन ऑफ मर्सी, जिसमें महाराज ने शिला प्रभुपाद के साथ अपने जो इंटीमेट इंटरेक्शंस हैं उसको डिस्क्लोज किया है। एक और प्रमुख महाराज जी का कंट्रीब्यूशन है बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण उज्जैन में, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर मार्बल का बना हुआ, और विदिन 10 months महाराज गॉट इट कंस्ट्रक्टेड। फरवरी 2006 में उसका बहुत ही भव्य इनॉग्रेशन भी हुआ। महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी ने बहुत एक सुंदर इंस्ट्रक्शन भी दिया था, योर लव फॉर मी विल बी शोन by how much you cooperate among yourselves when I'm gone। आपका मेरे प्रति प्रेम उस चीज से निर्धारित होगा कि जब मेरे जाने के बाद आप आपस में कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। और महाराज ने इस इंस्ट्रक्शन को भी अपने हृदय में धारण कर लिया, अपना प्राण मान लिया। एंड महाराज वाज एपिटोम ऑफ सेल्फलेस लव। सबसे मिलते थे, जिससे भी मिलते थे, उनका उदार हृदय बाहर निकल आता था। सो मैग्नेनिमस, सबको अपने खुले हाथों से महाराज स्वीकार करते थे, इतने प्रेम से बात करते थे। ये महाराज का हृदय। काफी लोगों ने बताया है, बोले महाराज खुद कुकिंग करते थे और फोन करके हमें बुलाते थे, बोले प्रसाद मैंने बनाया है, प्लीज आ जाइए। ये महाराज का प्रेम था सब भक्तों के प्रति। और महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत बात बताते थे, भगवान के साथ 5 प्रमुख रसों में कोई भक्त संबंध बना सकता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। दास्य रस में शांत रस से ज्यादा आनंद है, साख्य रस में दास्य रस से ज्यादा आनंद है, वात्सल्य रस में साख्य रस से ज्यादा आनंद है और माधुर्य रस में वात्सल्य रस से ज्यादा आनंद है। बट महाराज बताते थे, बोले इससे ऊपर भी एक रस है जो माधुर्य रस से भी ज्यादा आनंददायक है, और वो है प्रचार का रस। और ये रस कहीं ऊपर नहीं मिलेगा, इवन गोलोक में भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल गोलोक में मिलेगा, केवल और केवल इस जगत में मिलेगा। क्योंकि प्रचार गोलोक धाम में नहीं होता है, वहां तो पहले से सब भक्त हैं। प्रचार तो केवल गोलोक में होता है। और उसी रस का आस्वादन करने के लिए महाराज आखिरी समय में अमेरिका गए। शिला प्रभुपाद जी के आखिरी समय में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके साथ थे। शिला प्रभुपाद की इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करने की। भक्ति चारू महाराज he was sacrificing to be with Srila Prabhupada all the time. He was sacrificing, he was extending himself. सोचिए अब जब महाराज जी अपना शरीर त्याग रहे हैं, he was in the battlefield, अमेरिका में महायुद्ध स्थली में है, प्रचार कर रहे हैं, क्या श्रीला प्रभुपाद उनके साथ नहीं होंगे क्या? फिजिकली हो सकता है कि कोई भक्त उनके साथ ना हो, बट पूरे विश्व से प्रार्थनाएं, वो जो गूंज है महाराज जी के साथ हर स्थिति में थी, हर क्षण थी। महाराज जी कभी अकेले नहीं थे और अपने गुरु श्रीला प्रभुपाद तो उनके साथ हमेशा ही थे। पूरा विश्व एक साथ महाराज जी के लिए प्रार्थना कर रहा था, हरि नाम कर रहा था। तो ये दर्शाता है कि कितना प्रेम करते थे सब भक्त महाराज जी से। He was so respectable, he was so loving, even among GBC members। और महाराज जी इस धरा धाम को छोड़कर भगवान के धाम किस दिन लौटे? एक बहुत ही पावन दिवस पर, गुरु पूर्णिमा के उत्सव, सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि पर। वही सनातन गोस्वामी जिनका मेंशन श्रील रूप गोस्वामी करते हैं अपनी नेक्टर डिवोशन के शुरुआत में। तो ये संजोग हमें बहुत क्लियरली बताता है महाराज जी पासिंग अवे इज ग्लोरियस। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हो, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल। आचार्य बता रहे हैं, गुरु जन बता रहे हैं, बोले महाराज को तो श्रील प्रभुपाद कॉल कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वाज कॉलिंग हिम बैक टू गोलोक धाम, कहीं और सेवा उनकी, तो अपने नित्य धाम, नित्य सिद्ध धाम वापिस पहुंचे महाराज। वी शुड नॉट हैव एनी डाउट एट ऑल। एक योद्धा जब युद्ध स्थली पे अपनी जान देता है तो महिमा मंडित हो जाता है। तो इस प्रकार ये महाराज का मूड था, सैक्रिफाइस का मूड, प्रचार का मूड, सेल्फलेस सर्विस का मूड। इस होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की जय।
Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sanatan Goswami Prabhupada ki jai, Srila Vyasadeva ki jai, Samavet Bhaktavrinda ki jai. I'd like to welcome everyone to today's program, which is the fifth disappearance anniversary, Tirubhav of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, according to the Tithi. According to the sun calendar, it was the 4th of July, but according to Tithi, it's today. The program now is we're going to have some glorifications, some remembrances of His Holiness, followed by Pushpanjali Arti, and then followed by a wonderful prasad here. Pushpanjali Arti is scheduled to take place in his Samadhi, Pushpa Samadhi in the Samadhi area, depending whether the ground is waterlogged or not. It may be here. We'll let you know what is the situation. So let's start the program. I'll invite Her Grace Mahadevi Mataji to start and kick off this program of remembrances and glorification of Bhakti Charu Swami Maharaj. Mataji. दूसरे को बोलिए, मैं बाद में बोल सकता हूँ। पहले आप बोलिए ना, आप सीनियर हैं। Namo Vishnuvadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvasesha Sunyavari Paskachade Shatarane Jai Srila Prabhupada, Jai His Holiness Bhakti Charu Maharaj, Jai our Vrindavan Lords and all their devotees. So we were hearing Srila Prabhupada very keen to hear. So we have these wonderful programs where we get the opportunity to hear the glories of all the great acharyas in our movement. And just recently, today, His Holiness Bhakti Charu Maharaj, then we had Lokanath Swami and Gopal Krishna Maharaj. We're still remembering every day. And all these great acharyas, they all had a similar quality, that they were very keen to hear and not mixing chanting japa with hearing. Sometimes these programs, devotees may come and see as an opportunity to chant their japa. But actually you can't really hear keenly if you're chanting your japa and trying to hear the glories of the great personalities. So yes, we want to be very keen to hear every day. Bhagavatam class, sorry. I was walking over here and a big splash of something went inside. Sorry. So yes, very keen to hear. And Shravanam, as we know, is the first
quality. And His Holiness Bhakti Charu Swami, always enthusiastic to encourage devotees to hear very attentively and hear the glories of the great devotees of the Lord. He had such a special way of speaking, and this is how you know a great personality. When they speak, you're automatically drawn to wanting to hear. And they present the philosophy of Krishna consciousness so nicely, so wonderfully. So last night I was thinking about His Holiness Bhakti Charu Maharaj and tried to write a little poem. This is called A Gentle Voice in Service. In loving memory of His Holiness Bhakti Charu Swami, he moved with grace through temple and streets, a timeless saint who bowed before all with his lotus feet. He'd pause and ask with soft, serene eyes, "How are you, Mahadevi Mataji, and how's Chaitanya Nitai?" Maybe 35 years ago, he asked my eldest daughter to play the part of Malati in the wonderful movie that Bhakti Charu Swami created about Srila Prabhupada's life. If you haven't had the opportunity to see Abhay Charan, take the opportunity. Very wonderfully done. So he came and he picked out 6 of the students in an ashram at that time, and he brought them to England, and he gave them so much time and love. Maharaj was known for giving time to the youth and encouraging them to chant and to render some little service that they could do. Not just to speak, but to teach with his behavior and words. Each word he gave would make our hearts churn. Like Sanatan Goswami, friend to all, he'd lift the low and grace the small. He spoke of Prabhupada all the time. And whatever we do, say, offer, or give away, let's encourage others not to drift away. Take shelter in Prabhupada's books, Prabhupada's devotional process, Prabhupada's disciples, and the Prabhupada way. His Holiness Bhakti Charu Swami translated so many books, Prabhupada's eternal words, into Bengali, eternally divine. Yet he urged us not to merely quote, but live the truth the acharyas wrote. Don't just repeat, practice bhakti at every turn. Once in Atlanta, Georgia, in America in 1975, we were all at a book distributor reunion with Srila Prabhupada was there. And one of the book distributors asked Srila Prabhupada, "Oh, Srila Prabhupada, what service pleases you the most?" So, of course, we were all expecting for Prabhupada to say, "Oh, distribute my books." But Srila Prabhupada's answer came with a timeless pause: to love Krishna. This is the best service. This is the way to please me. So His Holiness Bhakti Charu Maharaj showed by his life given to Srila Prabhupada to love Krishna, to love Srila Prabhupada, and not to be afraid of the word love. His Holiness Bhakti Charu Swami would often say, "Don't fear the word love. We have loving devotional service, a loving tone, loving hearts. We have the 6 loving exchanges." So we may not serve with love as the pure devotees do, but we can try to speak and behave with loving mood, with respectful mood. This we can do. And then the love will come. Srila Prabhupada says so. One disciple told Srila Prabhupada that he didn't want to offer his obeisances. He didn't feel it. And Prabhupada said to him that if you do it, then the feeling will come.
So this is why we every day we have a repetitive process. And when we offer our obeisances, let's not make it an exercise where we're just boing. Let's go down, offer the full prayer, and feel gratitude that we get to touch our head on the floor of Prabhupada's temple. The dust of the Vaishnavas is all around. So in this way, even offering obeisances, as Krishna says in Bhagavad Gita. So this was His Holiness Bhakti Charu Maharaj's mood, that every little single service can be done in a awe and reverence, with great gratitude, and with love, at least with attempted love. Just do, and the feeling will develop through the practice. Be kind, not rough. Compassionate, not tough. Our mood is to see how to serve favorably, not looking for the faults or how to scold. A leader must correct at times, but even that service can be done with loving service in mind. Just like a mother guides her child. But discipline doesn't need to be hurtful or unkind. His Holiness Bhakti Charu Maharaj was always very chaste and respectful to women, never raising his voice. A son in service. We all saw him as a son in service, serving mother, as one of the 7 gurus, and he practiced what he preached. Not words alone, but his behavior would be our lessons. What honor truly means to teach. All women are mothers, and from his life that virtue grew, which we can all learn from. His etiquette, a soothing balm, could settle storms and bring in the calm. He bowed before both friend and foe, and let the sacred sweetness flow. Maharaj had that ability, like we know pure devotees have this ability. When he spoke, because he was always speaking from Srila Prabhupada's books, you would lean in, you were drawn to every word he would say. And still now, we're so fortunate we get the opportunity to hear everything that these great acharyas have given us. Maharaj taught that loving hearts expand, not to try to control, but to understand. Not many walk the path that he's shown, yet none, but he taught us we never walk alone. I feel honored for having had his association, and I pray to follow with some little drop of devotion. I hope that I can serve in such a way that pleases Srila Prabhupada, our Vrindavan Lords, and all their assembled devotees. Thank you, Bhakti Charu Maharaj, for inspiring me, encouraging me. And just to see how he inspired and encourages others, that's also our good fortune. When we see the process working with all of us, little by little, every day. Don't leave ISKCON. Such a wonderful mantra. Prabhupada describes that in the purport, Tate Nukampam Sushami Kamanam, that just like the millionaire's son, he knows that if he just stays alive, he'll get some of that money. So if we just stay on the path, whether it's distress, happiness, heat and cold, matras, barshas, we just stay on the path and we don't leave ISKCON, and we take the shelter of all these incredible devotees that are pushing on Srila Prabhupada's mission. Thank you. Hare Krishna. Namo. Thank you very much, Mataji, for your wonderful poem. Can I now request Her Grace Devi Shakti Mataji to come and say a few words? Thank you.
Has anyone read Madhu Savita's offering? Okay, beautiful offering. I'm going to read it. In 1976, when Bhakti Charu Swami joined as a bhakta in Mayapur, Mayapur was very different then. We had one building, and the long building was being made, and whenever money was collected, everything went to the construction. So the devotees were very poor and hungry. So just a minute. Yes. So we were all quite young then, and we all had our services. Bhakti Charu Swami, he was a bhakta then, Bhakta Kishore, and he was immediately put into the BBT for service. Prabhupada wanted him to translate his books, and we had a temple commander. His name was Madhu Sevita. He's now a GBC. So Madhu Sevita sent this offering. Where will I find that loving smile filled with care and affection that made you feel so important though you are worthless, that caused you to remember Prabhupada in every circumstance, that was pure sweetness? I'm so angry at you for leaving me here unprotected. Why did you decide to go back to Srila Prabhupada's lotus feet, not caring for how we would be unable to tolerate your departure? With whom shall I laugh, reading those signs in Italian that have a strange meaning in Bengali? So after Srila Prabhupada left, Madhu Savita was Italian, and he went back to become the GBC there, and Bhakti Charu Swami would visit him. And when you go to the European countries, there are road signs in the different languages. But what it says in Italian means something very funny in Bengali. So they would laugh at the road signs together. Are you going to tell Srimati Radharani that I treated you harshly when you were Bhakta Kishore? Or that you had to cook for me your monk delight recipe day after day when we were together in Calcutta? Oh, my most beloved brother, can you please plead my case with the Acharyas so that I may join you again in the intimacy of our Prabhupada family? I won't forget you, even if Krishna gives me a long span of life. I will imprison you in the core of my heart and cultivate the ardent desire to hug you again. Your devastated servant, brother, and friend, Madhu Savita Das. So naturally, when you first join ISKCON, the bonds that you make are very strong, and we remember each other over the years, watching each other grow up and get old together. And this is how we were able to observe Bhakti Charu Swami from the time that he joined. When he became a bhakta in Mayapur, because at that time there were very few Indian devotees, not like now. And when I saw him, that here is a young, educated, cultured person finally joining ISKCON, I thought now there's hope for ISKCON in India, because this person is so educated, so refined. He didn't need to be in a bhakta program. He already knew all the proper etiquette and how to behave with devotees. So I thought now finally there's hope for ISKCON in India. We're attracting young men like this. And sure enough, although he joined only in 1976, Prabhupada quickly gave him first and second initiation, 1977, Gaur Purnima, and then Rath Yatra gave him here in Vrindavan, sannyas. He proved himself to be a key follower, a key servant of Srila Prabhupada,
even after his departure, he became GBC. He twice became GBC chairman, and he was able to preach not only in India by establishing our Ujjain temple, Panihata temple, but eventually he started preaching all over the world, helping to save our new Mayapur temple in France, making many disciples all around the world, especially Europe, America. And finally, his last project was the DeLand project in Florida, where he wanted to set up an ideal Vedic society. So as his disciples, I'm sure you'll all continue under the shelter of his lotus feet, trying to carry out his different visions for carrying on Krishna consciousness. And as your, you can call us your Pishimas, because we're the father's sister, God's sister. If we can assist you in any way in your service, we're always here to help you. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Bhakti Charu Swami. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji, for the wonderful remembrances and qualities of Bhakti Charu Swami Maharaj, reminding us of them. Can I now request Dadi Bhaksha Prabhu to come and share his remembrances of Bhakti Charu Swami Maharaj? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हाँ, वास्तव में एक्चुअली गुरु पूर्णिमा का दिन है, वेरी महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण तिथि है। तो आज का दिन और हिज होलीनेस भक्ति चरु स्वामी महाराज गोलोक धाम में प्रवेश किए हैं। तो क्योंकि वो प्रभुपाद जी के इतने शिष्यों में से एक बहुत प्रिय शिष्य थे प्रभुपाद जी के, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत सेवा की है। मैं देखा 76 वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी के लिए अच्छा प्रसाद वगैरह भोजन बनाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद के शिष्य प्रिय शिष्य होने के नाते तो इसलिए प्रभुपाद जी ने आज गुरु पूर्णिमा का दिन शुभ दिन में जो है और उनको जो है गोलोक धाम में लेके चले गए, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरत होगी प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। इसलिए जितने भी प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य है सब प्रभुपाद जी के साथ चले गए। जितने भी प्रभुपाद जी को इतने मदद किए थे शुरू में इस्कॉन को, ये संस्था को स्थापना करने के लिए, प्रभुपाद के जितने भी राइट हैंड थे तमाल कृष्ण महाराज ये सब, तो वो सब ये प्रभुपाद जी के साथ चले गए और गोलोक धाम में। तो ये जो है वैष्णव की बड़ी कृपा है, दयालु है। भक्ति चरु महाराज बहुत दयालु थे, कृपा। कभी भी इजीली आप आसानी से उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी बोलते कैसे, ठीक है, हाउ आर यू, इजीली यू कैन टॉक टू हिम। तो बहुत प्रिय है, सबके साथ प्रेम करते थे। और यहाँ पर भी हम पुजारी थे 76 77, तो महाराज इतना प्रभुपाद जी का प्रसाद लेके हम पुजारी डिपार्टमेंट में प्लेट महाप्रसाद दे के जाते थे दोपहर को 2 बजे। तो
हमको भी प्रभुपाद जी का कृपा महाराज जी के द्वारा हमको भी मिला है प्रभुपाद का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए भक्ति चारू महाराज बहुत दयालु है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रभुपाद जी के लिए कार्य किए हैं। अभय चरण पिक्चर भी बनाए उन्होंने, मूवी अभय चरण, और इतना बड़ा विशाल मंदिर उज्जैन में बना के गए हैं। और उनकी स्मृति में जो है उनको यादगारी रहेगी पूरा लाइफ टाइम, पूरा 10,000 ईयर्स तक जो है उनका गुणगान होता रहेगा महाराज का, क्योंकि महाराज ने इतना दिव्य भव्य मंदिर बनाए हैं। और ये अभय चरण मूवी भी बनाए हैं, और इतना सुंदर महाराज गाते थे, कीर्तन वगैरह, प्रवचन, सत्संग, अभी कितना अच्छा प्रवचन महाराज कर रहे थे। तो ये उनकी स्मृति में जो है वो स्मृति अपने यहाँ है। तो ऐसे उनके इंस्ट्रक्शन, उनके स्मृति यदि महाराज इस धरातल पे है तो लेकिन खाली शरीर के द्वारा वो गए, लेकिन उन्होंने अच्छा कार्य करके गए हैं। तो उनके शिष्य लोगों को जो है अपने गुरु महाराज की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए, ताकि वो गुरु महाराज खुश होंगे, भक्ति चारू महाराज, तो उनको भी कृपा मिलती रहेगी, तो उनकी परंपरा और आगे बढ़ती रहेगी। जैसे प्रभुपाद ने बोला ये मूवमेंट 10,000 ईयर्स चलेगा, इसी तरह से जो है तो गुरु का शिष्य का अधिकार होता है कि गुरु की सेवा अच्छी तरह से करना, गुरु को प्रसन्न करना, जो गुरु जी ने कहा उनका आदेश का पालन करना। इसे पालन करके फिर हम भी गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी ने केवल 64 गौड़ीय मठ बनाए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, लेकिन प्रभुपाद जी जब गए 108 मंदिर बना के गए, डबल करके गए। तो इसी तरह से जो है भक्ति चारू स्वामी के शिष्य लोगों को भी डबल टेबल चौबल मंदिर बनाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही गुरु एक ही मंदिर भक्ति चारू महाराज बना के गए, उसी में ऐसा नहीं है, उनको एक्सपेंस करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वीते आछे तो नगरों आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। पृथ्वी गाँव शहर में जो है प्रचार होना चाहिए, गाँव शहर में महाप्रभु की भविष्यवाणी। तो अभी नया जनरेशन को फैलाना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभुपाद के शिष्य लोगों ने इतना करके गए हैं, तो उनको जो है डबल टेबल 10,000 वर्ष तक तो सब घर में जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का गुंजाइश सब जगह होना चाहिए। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्मजार, जन्म शास्त्र करी परोपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है उसका परोपकार करने का परोपकार करना है। प्रभुपाद जी हंस में बोलते थे यू आर इंडियन, भारतीय है तो आपका कर्तव्य है प्रचार करने का, दूसरे को उपदेश देने का, प्रचार करके लोगों को जो है अपना संस्कृति को फैलाना। तो प्रभुपाद जी हंस में इंडियन लोगों को बोलते थे। तो इसी तरह से जो है तो अपना गुरु का शिष्य अभी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी जो है मंदिर बनाना है और अलग अलग जगह में प्रचार करना है, तभी तो मूवमेंट और आगे जाएगा प्रभुपाद जी का मूवमेंट। नहीं तो फिर एक ही मंदिर में जो ऑलरेडी गुरु जी ने जो बना के गए, जैसे गोपाल के महाराज ने इतने मंदिर बनाए 18-20 मंदिर दिल्ली में, तो उसके अभी 18 में उनके शिष्य लोगों को उनको डबल करना है। हाँ, जैसे अभी महाराज ने उतना बनाया तो उतना नहीं, अपने गुरु से भी आगे हो, जैसे प्रभुपाद जी ने बढ़ाया। इसी तरह से तो इच्छा होनी चाहिए, मन में डिजायर होना चाहिए। तो डिजायर होगी तो गुरु को जो है सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए ये शिष्य का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए गुरु का आदेश का पालन करना और जो गुरु जी ने कहा है उसके आदेश के अनुसार रहना, तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो आज जो है बहुत एक्चुअली दुखद का दिन है। तो भक्ति चारू महाराज हमको छोड़ के धरातल से चले गए हैं। मेरे भी अच्छे प्रिय गुरु भाई थे, कभी भी आते थे, बातचीत होती थी। हाँ, एक्चुअली मेरे अभय चरण उन्होंने जब मुंबई में फिल्म शूटिंग किया तो बाहर से बहुत सारे बच्चों को लाया, तो किसी ने अभय चरण का जो है रोल नहीं कर पाए। तो फिर लास्ट में मेरी लड़की थी राधिका, अभी हॉलैंड में है, तो उनको जो है अभय चरण के लिए मांगा उन्होंने हमसे जूहू में, तो हमने उनको दिया। तो उन्होंने उनका ट्रायल लिया
तो ये चिकन सूप पीने के लिए। तो उन्होंने जो है जैसे प्रभुपाद जी ने किया था अभय चरण, ऐसे ही मेरी लड़की ने, मेरे बच्चे ने किया। तो एक्चुअली चिकन सूप नहीं था, वो जो है ये मौसमी जूस था। तो इसीलिए तो पी के सक्सेस। तो महाराज जो है बहुत बाद में बहुत खुश हो गए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि अभय चरण मेरे शिष्य के ग्रैंड चिल्ड्रन से बनने के लिए। तो इसीलिए बाहर के कर्मी लोगों को लाया था, कर्मी के बच्चे, कितने बच्चे लिए थे, लेकिन ट्रायल लिया, कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो लेकिन जब मेरे बच्चे को लेके गए तो फिर वो सक्सेस हुआ। अभय चरण आपने देखा होगा, जिसमें वो चिकन सूप उल्टी कर रहे हैं, तो वो मेरी लड़की है राधिका, अभी हॉलैंड में है। तो इसलिए महाराज कभी भी जब भी हमको मिलते थे, कोई भी उनके साथ में कोई गेस्ट रहता था, तो अभय चरण रोल इनकी लड़की ने किया है, कैसी है मेरी राधिका, ठीक है, उसमें महाराज पूछते थे, यादगारी याद करते थे। तो इस तरह से तो उनको अब राधिका के लिए जो है उन्होंने 20,000 रुपये का चेक भी दक्षिणा दिया, क्योंकि तो सक्सेसफुल हुआ वह कि बहुत खुश हो गए थे ये अभय चरण रोल के द्वारा भक्ति चरु महाराज। तो मैं उनको मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर भी इसी कृपा करते रहे, ताकि मैं जो भी जितना दिन मेरा बचा हुआ है तो उसमें मैं अपने प्रभुपाद जी की सेवा में लगा रहूँ, मेरी भक्ति भी आगे बढ़ती रहे। तो यही कामना करते हुए तो बोलो हिज होलीनेस भक्ति चरु महाराज की, श्रील भक्ति चरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू। दादी बख्शा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज के गुणों का वर्णन करने के लिए और हमें जीवन के लक्ष्य के बारे में याद दिलाने के लिए। थैंक यू। अब मैं राधे श्यामानंद महाराज को आमंत्रित करता हूँ, आए और महाराज के बारे में कुछ 2 शब्द बोलें। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज का 5th डिसएपियरेंस डे तिरुभाव दिवस हम मना रहे हैं। ये सारे संसार में ही मनाया जा रहा है आज। और आज जैसे बताए एक विशेष तिथि है, सनातन गोस्वामी का डिसएपियरेंस डे है और गुरु पूर्णिमा भी है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे भगवान ने कहा नियाविक्रमनासु अस्ति प्रत्युवायुन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातु भयात्। जो पूर्व जन्म में भजन किया है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते, तो उसको जो है महाराज के जीवन से पूरा ये श्लोक हम देख सकते हैं। क्योंकि जो पूर्व जन्म में जो भजन करता है तो सुची नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र घरों में और धनाढ़ परिवार में जन्म होता है उसका। तो परम पूज्य जो है भक्ति चारु महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक बहुत विशेष धनाढ़ परिवार से थे महाराज। दूसरा जो है उनको भजन किया है तो फिर से जो है उनको अवसर दिया जाता है। तो जब जर्मन में जो है परम पूज्य महाराज जी जो अध्ययन कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद जी के शिष्यों से उनकी भेंट हुई थी। तो तुरंत उनको देख करके इतना आकर्षित हुए, महाराज को आश्चर्य लगा। ये जो भारत की संस्कृति है, गीता भागवत पर प्रवचन करना, जब उन्होंने विदेशी लोगों को देखा प्रवचन करते हुए तो बहुत आकर्षित हुए और तुरंत वो जर्मन छोड़ करके फिर जो है दिल्ली आए और दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगह अनेक स्थानों पर पहले विशेषकर वो रामकृष्ण परमहंस से बहुत आकर्षित थे। लेकिन जो उन्होंने फिर रह करके देखा तो बहुत कुछ उनको ठीक नहीं लगा और फिर प्रभुपाद जी के पुस्तक उन्होंने पढ़ी और जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु।
तो जो भी उनकी डाउट थी, जो भी उनकी समस्या थी, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके भक्ति चारू महाराज पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे और उनको लगा कि बस ये ही हमारे गुरु होंगे। और जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रहा था महाराज जी का, तो उसमें जो एक भक्त बोल रहे हैं, उनके शिष्य बोल रहे हैं उज्जैन में, कि जिस दिन महाराज का उन्होंने परम पूज्य महाराज जी ने, भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी की ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी, उसी रात्रि उनको जो है प्रभुपाद जी सपना देश हुआ। प्रभुपाद जी उनके सपने में आए और जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने को लगा कि हाँ ये ही मेरे असली गुरु हो सकते हैं। और जैसे हम सुने थे कि 1977 में उन्होंने प्रयागराज में पहली और दूसरी दीक्षा उन्होंने परम पूज्य क्या नाम है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने ग्रहण किए। तो परम पूज्य जो है भक्ति चारू महाराज जो है अनेक चीजों के लिए विख्यात हैं। तो सबसे पहले उनका जो है विनम्रता, तृणादपि सुनी चेना, जैसे कहा है कीर्तनीय सदा हरे, कीर्तनीय सदा हरे, कौन कीर्तन करेगा, तृणादपि सुनी चेना, ये है वो जो है करेगा। और हमने देखा इस जो है महाराज जी के क्या नाम है उनमें चरित्र में आप देखना कुछ वीडियो दिखाए थे, हाँ जिससे भी मिलते हैं महाराज जी हंस करके बात करते। वैसे मिलते तो सभी हैं लेकिन कौन किस पोजीशन में मिल रहा है इससे उनका स्वभाव परिचित हो जाता है। तो महाराज जी जिनसे भी मिले हैं महाराज जी देखते हैं वो हर किसी से जो है बड़े ही कैसे मिलते हैं, बड़े ही जो है हंस करके मिलते हैं। तो ये विशेष बात थी। जैसे एक बार जो है हम क्या नाम यहाँ थे क्या नाम है वृंदावन में कार्तिक महीने में जो गोपी गीत चल रहा था, उस समय बलराम हॉल था वहीं मंदिर के पास ही। तो वहाँ परम पूज्य महाराज जी आए थे उसी समय, तो कुछ अनाउंस करना था उनको। तो उन्होंने जो है हम अनाउंस कर रहे थे तो महाराज बोले कि देखो एक उन्होंने किसी एक अपने शिष्य के लिए भी कहा था कि उन्होंने कुछ डोनेशन दिया था कि उनकी जो है स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए आप जो है थोड़ा सा बोलो। तो हमें बहुत वो लगा कि देखो महाराज कितने चिंतित हैं अपने शिष्यों के लिए भी और डोनरों के लिए भी। और दूसरा हमें ये भी फीलिंग हुआ कि महाराज जो है हमसे बिल्कुल इतना नम्रता से बात किए। प्रभुपाद जी ने पहली ही भेंट में जो है परम पूज्य महाराज जी को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी जो स्वीटनेस है, जो बंगाली उनका उच्चारण और इंग्लिश जो उनकी उच्चारण होती थी, प्रभुपाद पहले ही उसमें जो है उनको मान लिए कि हाँ ये अपना असली शिष्य हो सकता है। तो नम्रता की महाराज जो है पराकाष्ठा है जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा है उनकी विद्वता। विद्वता के बारे में तो फिर कहना ही क्या, उन्होंने जो है अनेक ग्रंथों का संकलन किया है और उन्होंने जो है क्या नाम है एक पुस्तक लिखी ओशन ऑफ मर्सी, करुणा प्रभुपाद जी के लिए करुणा सागर। तो उन्होंने जो है अनेक पुस्तकों का निर्माण संकलन किया है। साथ साथ में प्रभुपाद जी की अनेक पुस्तकों का बंगला भाषा में उन्होंने वो किया है। अब देखो कोई भी जो है ट्रांसलेट करता है तो थोड़ा इस्कॉन के बारे में जानता है, फिलॉसफी, क्योंकि उसमें लिख रहे हैं केवल एजेट नहीं भाव भी डाला जाता है। तो अभी जो है परम पूज्य महाराज जी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली उनसे कहा कि तुम क्या करो मेरी पुस्तकों का बंगला भाषा में ट्रांसलेशन करो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को देख करके कहा था हाँ तुम जो है अमेरिका जा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो अंग्रेजी भाषा में और जो है गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसे उनको पहचाना, ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी ने भी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज को पहचाना। तुम जो है बंगला भाषा में मेरी सारी पुस्तकों का ट्रांसलेशन करो और उन्होंने किया। आज सारे संसार में जो है बंगाल में आप देख रहे ना कितना, मैं तो जानता हूं सबसे ज्यादा भक्त बने हैं तो बंगाल और वो बांग्लादेश वो साइड में ही बने हैं, क्योंकि वहाँ इतना प्रचार प्रसार हुआ है और प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम रहा है जो है प्रभुपाद जी की जो है ट्रांसलेशन हुई जो बंगला भाषा में बुकों का। तो विद्वता में भी हम जो है देख सकते हैं। तीसरा हमने देखा प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण। ये
जो है इस बात से हम सोच सकते हैं कि प्रभु उन्होंने जो है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने कहा भी था कि मैं अपने शिष्यों से जो है स्पेशली आग्रह करता हूं कि वो कभी भी इस्कॉन को छोड़ करके न जाए, चाहे कितनी भी समस्या क्यों न हो, चाहे कितना भी कुछ क्यों न हो, लेकिन फिर भी इस्कॉन में वो बने रहें। तो इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति उनका जो समर्पण है, आज उनको इसलिए तो बोलते हैं ना, क्या नाम, प्रभुपाद जो ग्रेट कमांडर ऑफ चीफ या प्रभुपाद में हम जो है समझ सकते हैं कि जैसे हर एक सन्यासी का कोई विशेष योगदान रहा है। तो जैसे परम पूज्य क्या नाम है गोपाल कृष्ण महाराज का हम देख सकते हैं, उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, पुस्तक वितरण कराई, इनका एक विशेष योगदान रहा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो है उन्होंने भागवत क्या है इससे परिचय कराया, ठीक है ना। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन सम्राट कहे जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में प्रभुपाद कौन है, तो प्रभुपाद को विशेष रूप से जो है सारे संसार में फैलाए वो है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के। तो प्रभु उनकी जो मूवी जो निकली है, लाखों लाखों लोग जो है, हालांकि प्रभुपाद जो है लीलामृत लिखी गई थी, परम पूज्य भक्ति स्वरूप क्या नाम सस्वरूप महाराज ने लिखा था उसको, लेकिन लिख करके कितना पढ़े कितना समझे ये डाउटफुल है। लेकिन जैसी ये मूवी निकली सारे संसार में प्रभुपाद 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 ये तहलका मचा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद वास्तव में ही क्या नाम है जो सारे संसार को दिए प्रभुपाद जी को, वो प्रभुपाद मूवी के द्वारा परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा दिया गया। और विशेष करके जो है महाराज के कई अद्भुत गुण हैं, और जिसमें देख सकते हैं हम वैष्णव सेवा। जैसे क्या नाम है कृष्णदास कविराज ने कहा है 3 महाबल क्या है, भक्त पद जल नहीं, जो है 3 उनमें एक तो वैष्णव सेवा, नाम प्रचार है। तो इसमें जो है वैष्णव सेवा में हम समझ सकते हैं कि मैंने सुना है कि जब महाराज उज्जैन थे या कहीं दूसरी जगह, तो जब भी कोई जाता था स्पेशली कभी कभी वो स्वयं कुकिंग करते थे, स्वयं कुकिंग करके जो है और भक्तों को कहते थे ये प्रसाद जो है सर्व करो। इसके बाद में मान लीजिए कोई दूर देश से आया, कोई बाहर जाना है, तो महाराज स्पेशली उनको बोलते उनके रास्ते के लिए जो भी प्रसाद की व्यवस्था करो, और रास्ते के लिए भी उनको रखते थे। तो इससे हम समझते हैं, हम लोग तो चलो कोई आता है एक बार जैसे तैसे लेके खिलाते हैं, बाद में फिर वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है पूछते भी नहीं है। लेकिन परम पूज्य महाराज जी के अंदर ही हमने विशेष गुण देखा है कि हर एक जो भी जाता है पर्सनल कुकिंग करके खिलाना, ये कोई सबके बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार जो है महाराज जी का एक विशेष गुण जो है वैष्णव सेवा। और एक और गुण है जिसके लिए अभी अभी वर्णन किया गया है, जैसे 4 रसों में सेवा होती है, 5 रसों में है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये 4 रस हैं। और पहला जो है क्या नाम है, एक और कौन सा नहीं, पहला रस जो है शांत दास्य सख्य और वात्सल्य। इसमें जो है आज मैं पहली बार मैंने और भी एक वीडियो में सुना था, जो 5वां रस है और वो है सबसे टॉप मोस्ट रस, जिसमें जो है क्या नाम है माधुर रस से भी अनंत गुना बढ़ करके वो आनंद है, और वो है जो है प्रचार रस। और उसके जो है प्रचार रस के लिए जैसे हमने देखा है परम पूज्य महाराज जी जो है पूरा उन्होंने अपना जीवन वो क्या नाम है उसको समर्पित किया है। और विशेष करके जब सारा संसार अपने अपने घरों में अपने अपने गुप्त स्थानों में शांत बैठा था, उस समय परम पूज्य महाराज जो है अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं प्रचार के लिए। और इससे हम समझ सकते हैं कि महाराज का प्रचार के लिए उनके लेक्चरों के लिए अद्भुत लेक्चर है। जब भी वो कोई लेक्चर देते हैं हजारों की संख्या में जो भक्त हैं बिल्कुल एकदम उनका जो है एक एक शब्द को सुनते हैं।
तो लेक्चरों के लिए भी उनका अद्भुत ज्ञान है। मैंने उनके कई सारे लेक्चर सुने हैं। और एक बार जो है क्या नाम है, मायापुर में था शायद 95-6 में, तो एक प्रश्न किया गया था कैसे माया जो है भक्त लोग जो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जो संसारी लोग हैं खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जा रहा है, उनको कोई संघर्ष नहीं है, ये सब कैसे है। और जो महाराज ने उसको आंसर दिया उसमें जो है तालियां बजी तत्तड़ा करके दे दे दे, पूरा 5 मिनट तक वो हॉल गूंजता ही रहा मायापुर का। तो आज हम जो है जैसे सोच सकते हैं इतने महान आचार्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज का आज तिरुभाव दिवस है, और जैसे हम सुने हैं कि आज विशेष स्थिति भी है, और यही देखा जाता है कौन है कैसी स्थिति में। ये भी मैंने सुना था कि हमारे साथ एक जो संन्यास दीक्षा के लिए थे, जो परम पूज्य महाराज जी से जो है वो संन्यास लेने वाले थे भक्ति चारू महाराज से, तो उस समय जब अमेरिका में थे तो लास्ट मूवमेंट में लास्ट समय में वो गया, जो हालांकि उसमें अलाउ नहीं था किसी को, लेकिन जो भक्त था उनका नाम था गोविंद ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि महाराज जी जो है बैठ करके क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ रहे हैं, ब्रह्म संहिता का उच्चारण कर रहे हैं। तो अंत समय में भी हम देख सकते हैं उनकी कॉन्शस कहाँ है, किस प्रकार है, और यही देखा जाता है भजन करो साधन करो मरते जाने जाए। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी का पूरा जीवन शुरू से अंत तक हम दे सकते हैं प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण और समर्पित था। तो आज हम उनके चरणों में यही विनती कर सकते हैं कि हम तो इस प्रकार नहीं बन सकते, लेकिन उनके चरणों की एक कण भी हमें मिलेगा तो कुछ हम जो है उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। We like to thank His Holiness Radha Shyamananda Prabhu Maharaj, to wonderfully highlighting the wonderful qualities of Bhakti Charu Swami Maharaj. Thank you, Maharaj. Now, Ishwar Prabhu would like to invite and say a few words in glorification of His Holiness. Please come. इनको जाने दो थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरवे गुरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति सितारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki. So today it's a very auspicious gathering because we are observing the passing of His Holiness Bhakti Charu Maharaj. And today, of course, today is Guru Vyas Purnima, and also the disappearance day of Srila Sanatana Goswami. So very auspicious day. Now, today being the disappearance day of Srila Bhakti Charu Maharaj, we can say that when Maharaj passing was untimely because it was unexpected. But at the same time, since everything is according to Krishna's will, so it's Krishna's own arrangement to bring his dear devotee back to home. So in one sense, it's auspicious, and especially on a day like this, Guru Punim, Vyas Punim, like that. So Maharaj,
was not to practically all ISKCON devotees. My memory of Maharaj step back to around 88 or 89. So that time, this was when the rhetoric ideology was beginning in ISKCON. Because that time, since 1982, we've had series of high-profile guru fall downs. So this embodied few devotees to start the rhetoric idea. So, in order to defeat this ideology, so Bhakti Charu Maharaj was deputed by the JBC to counteract this ideology. So Maharaj wrote a very nice, fine piece about how this idea is completely bogus. The idea that Prabhupada will always be guru, there can be no guru after Prabhupada and all that. So Maharaj wrote a fine piece substantiating our parampara system and all that. So that was my first experience of Maharaj. Of course, that time I've not met him personally because I was in America and Maharaj is, I don't know which year he was coming to the US, but I haven't met him that time. But when I came to India in 95, and then in 96, I was we were celebrating this Prabhupada centennial. So it was the day of Srila Bhaktisiddhanta's appearance day. So Maharaj gave Srimad Bhagavatam class. And he specifically gave class on the Srila Bhaktisiddhanta's the fourth sloka of the pranam mantra, which was Namaste Gauravani Srimutaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Apadvanta Siddhanta, something like that. So Maharaj gave a very wonderful lecture on the meaning of that sloka, the meaning of the sloka, which is the Srila Bhaktisiddhanta being a Rupanuga, and they actually came to smash the Mayavad. So Maharaj gave such a brilliant class that the whole temple room was energized by that class. So since that time, I've always known Maharaj to be very brilliant, very highly scholarly, scholarly person. And of course, from his background, Maharaj came from a very high-class society, aristocratic Bengali society that Maharaj came from. So he was one of those persons who was actually sent by Krishna to assist Srila Prabhupada in his mission. So he was not an ordinary person that, yes, it's not like somebody preached to, they gave you a book, and then you join ISKCON. And the Maharaj was not like that. He was specifically sent by Krishna to assist Prabhupada. So which means he was, let's say, one of the top generals. But when there's army, there's always generals who will lead the army. So Maharaj was in that category of one of the army. So and Maharaj was always very, very, he was an idea Vaishnava, very, very personal in his dealings, because over the years, I've had a series of interaction with Maharaj over the years, until he passed away 5 years ago. So his interaction was very, very personal with the devotees. And the mood of to always assisting the devotees in their dedication to Srila Prabhupada was always unmatched. Even just like, for example, on his Vyasa Puja day, so Maharaj, rather than celebrating his Vyasa Puja, he always dedicated his Vyasa Puja days that week
for the glorification of Srila Prabhupada. Always. Maharaj, and a few times when I was in Mayapur, that was what he was always doing. So which means he had no abhima of himself. Everything is Prabhupada. Everything is Prabhupada. How everybody can come to the lotus feet of Prabhupada and serve Srila Prabhupada. And of course, the recognition of Srila Prabhupada as the founder Acharya of ISKCON. So Maharaj always makes sure that every devotee of ISKCON is in that consciousness that yes, whatever we know is all coming from Prabhupada. How to serve Krishna, who is Krishna, the method of serving Krishna, it's all coming from Prabhupada because Prabhupada is his founder Acharya. So Maharaj was always making everybody knows that. The famous publication which he did, the Srila Prabhupada founder Acharya, which he authored that book. I think here in the Ravindra Swarup Prabhu, they authored the book, and which was he financed it and printed it and distributed this book freely to all the devotees. So, and of course, his production of Abhay Charan is itself, it's actually worth award itself. The Abhay Charan, the life of Prabhupada, the life of the life and activities of Prabhupada. That's Syria. I'm sure if you have not watched it, you should watch the series. And the series is available in both English and Hindi. I think the English was produced first, and then they translated into Hindi.